Like a birthday of Shiva, you can say, or something. How can it be? Because he's eternal. He's all the time there. So, what demarcates today celebration is the establishment of Shiva on this earth. In the material sense, every matter has been created with a deity, and that deity is established in that matter as you know. So when it was thought by Adishakti that first we must establish Shiva. Without Shiva, you cannot establish him. First he is to be established, because he is the absolute. So you have to establish Shiva. And now what should we do? How to establish him? He is the God of Tamoguna. He is the cold. He is the God of all that is not active. So first of all, this earth, when it receded from the sun, which was very hot, was taken very near to the moon. The moon is the brother-in-law of Shiva. So it was taken so close to moon that the whole earth got covered with ice. And it was then gradually moved towards the sun. When it was moved towards the sun gradually, then it started melting. And the point that did not melt at all was the point where Shiva was to be established. That was predestined, that spot. And that spot is the Kailash. The ice never melts. And if you see, the whole mountain is like the face of Shiva. The eyes, the nose and everything you can see clearly jetting out. And all the year round it keeps its shape as. That is how Shiva was created. And he was placed in a witness state as the spectator of all that happens on this earth, facing towards the Kundalini of the universe, which they were going to place in India. So he is facing towards the south. He is looking at the south with both the hands like this, like a spectator watching the spectacle of the Adi Kundalini. That is how Shiva was created. So, though we say that the heart of the universe is England, still Shiva resides on top of this earth. This is the thing. Like you have got the seat of Shiva on top of your head, but he resides in your heart, in the same way Shiva belongs to this place. And he looks at the whole body from this point. So the feet are the south, this is the north, this is the east, west, and this is the east. That is how we can see the whole map of the universe or the world that is created. So now, Mr. Better, Sit down. don't stand up. Listen to my lecture now, don't take photographs. You must listen to my lecture attentively.
Yes. In a meditative way, you must listen to me. You must make full use of me, isn't it? You should be meditative. Then you can hear me very clearly. You don't have to bother. You have to be meditative. So this is south. So you are facing towards the south as a witness. Just now, somebody told me that in the south people put their head towards the south and put their feet towards the north. I mean, imagine. The feet are put towards Shiva, who is on the north. Kailasha is in the north, isn't it? It is not in the south. So why put your feet towards the north? I mean, one must use logic. These Brahmins have told you all these stories and you are doing just the opposite. That should not be done. Sometimes I feel God save this country from Brahmins. They are everywhere now. They are our rulers, they are everywhere. And they have no idea what Brahma is. If they are real Brahmins, I am sure one day the real Brahmins will be in charge of this country. So now, when we understand that Shiva is the first thing that is established in the matter, then in us also first the Shiva is established. When the fetus takes its form, the throb in the heart is the establishment of Shiva. That is the sign that Shiva has been established. In case of people who are born with bad heart or with trouble, one has to say that Shiva is not fully established. Not that they are bad people, but they are not supposed to live for long and have to have another heart later on maybe, or that there might be some sort of a problem in their previous lives, and if they pay attention to Shiva Tattva, their heart can be cured. So the most important organ in the body is the heart. If the heart fails, you cannot remain. So the most important thing is to look after your Shiva principle, which is the earth. We are worried about every sort of mundane thing. Worried about this, worried about that. But we are not worried about our spirit. This is the biggest problems with us. If you worry about your spirit, if you pay attention to your spirit, the whole universe then vibrates with Parabrahma, which is nothing but joy. So without any attention to spirit, if you think we can enjoy life, you cannot. You cannot enjoy your life if you pay attention to other nonsensical things and you do not pay attention to your spirit. The complete silence comes into us only through spirit. If a spirit is awakened within us, this silence starts working and you feel extremely relaxed and absolutely one with yourself. There is no problem. You don't seek other things that normally people seek. You seek your own company and you want to be some time with yourself. Only thing that you seek after finding your spirit is the company of other Sahajogis who also have found the spirit. So there's a rapport established between spirit, that is in the heart. And this spirit is the universal being within us, about which I have told you, that once you become one with the spirit, you automatically become universally conscious.
There are so many qualities of the Shiva Tattva, of the principle of Shiva, that I need not tell you. But today I will tell you another dimension which I have not touched so far about Shiva Tattva. The physical aspect of Shiva Tattva is that such a person is more a cold type of a person. In the sense that such a person is not a person who gives hot vibrations, but who has too much of it sometimes, not in balance, who overdoes it, develops a kind of a temperament which can be extremely cold. Could be low blood pressure with it, could be diarrhea also. Diarrhea also one can get with too much of spiritual strength. And also could be on the plump side because of the left side. Because left side is the kapha, as you call it. Kapha is the phlegm that is more. Because the left side is more, such a person is always apt to catch cold and has problems of the cold. So such a person has to protect oneself from getting into colds and things like that, and the methods to be employed are to be learned to surge over. But to give it a balance, the spirit itself is beyond health problems. But the left-sided person who always thinks of the spirit also can become one-sided when he has to live on this earth. He has to be a balanced person. So he has to take to another side, and that side is the activity of the spiritual growth within himself. A person who is very spiritually developed cannot exist as a Shiva Tattva on this earth. He has to exist as a balanced personality. And when he starts developing that balancing within himself, the spirit from his heart starts rising and goes on top of his head. So this is the second stage where one has to be. Here is the whole collectivity. So when you start taking your love and affection into your central nervous system, you can say, and put it on top of your head. That means as soon as you put it in your Virat, when it starts spreading through your Virata Shakti, through your collective being, then only you are a complete person. Otherwise you are a Shiva Tattva. Shiva Tattva exists whether this universe exists or not. It exists even when the whole universe is existing, even when it vanishes, it all goes into that, merges into that Shiva Tattva. So a person who has a spiritual hankering must know that to raise your Shiva above the heart level, he has to raise it gradually onto a very detached method of existing on top of the surface, where there is a complete balance. Complete balance. Many people I have seen in Sahaja Yoga are extremely loving, nice, very sweet persons. Like in Delhi, I would say people are not so harsh as in Bombay. Bombay people could be harsh, Pune people are little harsh also. But Bombay and Pune people are deep. The reason is they have balanced themselves a little. And they have gone above their heart feelings like sympathy. Don't be unkind to somebody, don't say anything harsh to somebody. Can be very, very funny also sometimes. Like yesterday I was sleeping in the place where you always sleep. Now if I was in any Bombay or Pune center, anywhere, you can't hear any voice, anywhere, nothing. Like a lion, you see. Like a tiger
is in a forest, nobody will hear your voice. If there's a tiger, you can know for miles together there's a tiger somewhere. It's so sad. But if I am in Delhi, then everybody's talking. Somebody was talking about money, this, that. The whole time the jabbering was, even the Sahajogis from foreign had become Delhi Sahajogis. They were all talking so much, I was surprised. How did they take to this talking so much there? All were talking jagar jagar. On the contrary, if I am sleeping there, you all should have been in meditation, sitting down and doing meditation. Instead of that, everybody was busy with all the possible nonsensical topics as if they have no other chance to talk. And they were all jabbering, jab, 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 jab. I didn't know what to say and I didn't know what to explain. But this is what one has to know, that unless and until you raise your sympathetic attitude, like you tell somebody something, I have had such a problem in this business, say example, like I mean what a topic, but it doesn't matter. If you start, I had a problem in this one, another one, yes, I too had, see the sympathies. I too had such a problem, these people are so bad, that happened, we had the same problem, same talk. They are all, you see, talking about things which are irrelevant to Sahaja. Even relevant to Sahaja Yoga, you should not talk when I am there. I have to make humble request to all of you that the way you people sometimes behave is not good and is not congenial to Sahaja Yoga. Even to keep your mouth open in my front is not a good thing. And I don't want to tell you in such details, but it is so many things are there that you have to learn before you raise your Shiva Tattva from your heart. You are good at pleasing people, of organizing, you are excellent, you organize very well, there are no quarrels. Sahajogis in Bombay quarrel quite a lot, and even Pune Sahajogis are quarrels. But I must say Pune Sahajogis are very deep, and Bombay Sahajogis are very deep. Individually, they have achieved something. Now they have to go further than that, is to go a little bit in the heart again. This is the second descent they have to feel more that way. Because that way they are very, very strict with people. But you see, certain amount of strictness is to be accepted. For example, if somebody is told, don't touch mother's feet, one feels very bad. But this is a very mundane sort of an understanding of the mother. If she says, don't touch my feet, that's what you are supposed to do. You have to do exactly what will please me and not what will please you. So you must change your attention for pleasing all the public. Some people say those who come first time, mother, we must not say this. You must. Certain thing you must say to them. Otherwise you will make me aprasanna. That will cause problem. But when you say to others, you need not go like Pune and Bombay people in their special Marathi language, but say it in a proper Urdu style, that people don't feel bad, but you must say it. You should not put those people on my head. Instead of that, you should tell them in such a way that people are all. So to go deeper into you, we must do also individual meditation and samuhik. I would not say all the Sahajogis in Delhi are like that, but we are very good at organizing. Which our Bombay Sahajogis and these Pune Sahajogis must learn. They quarrel among themselves and I really get fed up. And they treat each other shabbily, that I don't like. But individually they are alright. So they become individualistic. Some people become individualistic and some people become publicist. They please the public. Now there are two extremes. What should a Sahajogi do? They have to become mother addicts. They should do what your mother likes. Do you understand? Need not please the public or need not please the individual, but do what your mother will like. That's a very simple thing which Adi Shankaracharya has told you, that just keep the mother free.
But nobody makes that study. Try to make the study what makes mother feel. Then you will see, I am very easily pleased, you see, as a Shiva Tattva. Even if you make mistakes, twice you pull your ears, all right. But don't go too far. You see, the mistakes you commit is all right, but don't take it for granted that you can go on committing mistakes, because you will get a big rope, but you will hang yourself ultimately, isn't it? So be afraid of the rope also which is given to you. It will hang you much better otherwise. So one has to understand that you should not be addicted to public opinion or to the opinion of your own. Both things are wrong. You must behave in such a manner that it should please all the deities within me. As far as I am concerned, I don't exist. I have no existence. Really, believe me, I have no existence at all. I just is an assemblage of so many existences. Otherwise, I don't exist. I don't find myself anywhere in this body, anywhere. I don't find myself anywhere in the universe. I'm nowhere. I sometimes find, what is all this? It's not mine. It's all foreign to me. But still I permeate into it, enjoy it, live with it. But I'm not in it. Nowhere. So if you just try to understand what pleases your mother, you will develop your dignity because I want you to be dignified. It will develop your joy because I want you to be joyous. It will give you more capacity to achieve more vibrations within yourself, because that is what I am doing. Whatever is good for you, if you do that, it will please. So what I think is good for you, you may not think. You may have your own ideas, individualistic again, or maybe public-wise. Like I have told you that please don't arrange my program before 7 o'clock in the evening. Now you may say it won't suit our public. Doesn't matter. It doesn't suit me. That's the main point. Because I have certain timings when only I can really be very good. That time I have to give to somebody else. It's fixed. So you don't fix my timings according to yours. Morning time before 11 o'clock, no program should be fixed. Early in the morning if you fix at 5, I don't mind. I have certain timings which I have to use for some other purpose. So you have to understand that whatever suits me should be done, because that is for your good also. Because there I am most beneficial. I am just telling you my own tricks so that you take more advantage of it. But they insist on that the people who are going to the office won't be able to come. Such people should not come at all. If there is a picture at 7 o'clock, they will go at that picture or not. Then why should you make your mother so cheap that it should suit their convenience? If there are few people, it is even better for us. We'll have better accommodation in the kingdom of God. So don't make me cheap. That one should understand, not to cheapen me. Keeping the dignity of your mother, whatever is to be achieved, I agree that all the brothers and sisters must be heard, all the public must be heard, but we can't get rid of the kachras otherwise, you see. There are lots of things which are to be just thrown away. So we should not worry about the kachra part. Whatever is the best we'll have. But to have that also one should not speak harshly. Again I will say not to use harsh words. The way people get out, like that one should not talk. Change your language. You must educate yourself how to talk to people in a soft way, in a proper. That is very important for Sahaja Yoga. Because if you go on insulting, maybe you might insult some saint. So you should not do in that way. Understand it. And try to make
your individual being so capable that when you go to the public, you are able to put the right perspective, right concept, the right conduct, the right behavior, and the right knowledge. Here I do not mean right rationally, right which is absolute. Shiva is the absolute. He is the giver of absolute knowledge. He knows what pleases me. The moment something will happen that will really displease me, he will shut the door. He is just watching this to please me. The moment he'll find that this is not working out, he'll stop the whole show and he'll say, shut it, finish. So though I may say the spectator is Shiva, but he is just a judge and he sees those things. So try to be alright. A nice spectacle I try to make to please Shiva so he continues to be there, and this let universe be a nice playful thing in which you rise and attain that eternal life which is promised. But one has to understand what pleases others. Some people have a habit of just looking at me straight all the time. It's not the way to be done. Put your eyes down all the time. Just you cannot stare at me. It's stupid. Apart from stupidity, it will not please me. Will it please you if I start staring at you all the time? I don't stare at you. I try to please you by doing all kinds of things. Why don't you learn some things from me, how I try to please? You can't do all these things, of course. I know. Because somebody says, Mother, we went there, a horse was given to us, this, that. Lisa, you cannot achieve your sight for me. See? If I have a difficulty, you can't solve my difficulty. Isn't it? But I can solve it. So I can please you very easily because I have so many methods of pleasing you. So whatever methods are there, by which one should not positively displease. That's the only thing. You don't do anything special, but don't do something extraordinary just to displease. If you understand this simple thing, that don't try to do anything that will displease, you please. It is so simple. You don't have to do anything extra. Just try to be loving, affectionate, dignified, and I'll be very happy with all that. As it is, I'm overjoyed. I'm very happy. But I have to tell you what one has to achieve and how one has to go about these things. So it is necessary now for Delhi people to rise from the heart to the Sastra. And it is necessary for Bombay and Pune people to go from heart to go from the Sahasrara to the heart. I would say Rauri people are in between. Rauri people are in between. They are very good organizers and they don't create problem for me as far as individuals are concerned. So I think Rauri is a place, perhaps maybe it is my car, that it is so good whatever it is. But we all can be like that. We all can change and inform each other and improve and educate us. All this education can come to us if we really love ourselves and care for our evolution. We don't have to bother about it much if we really care. Gradually all these things will work out and the balance can be established. Those people who talk too much should not talk so much. What I feel that when you talk too much, when you stop, you just stop. It is in between. When it is necessary, you must talk. When it is not necessary, you should not talk. So that kind of personality gradually you can develop in Sahaja Yoga. That you will develop that wisdom, how far to go, how far not to go. Not to go is the quality of Shiva.
He doesn't do anything. He's just sitting down there and watching the whole show. He doesn't do anything. But still, he is the one who has to watch. If he doesn't watch, then the whole show is over. If you understand that in not doing anything, how much he is doing, see the contrast. He is doing nothing as such, but he is making everybody dance to please him. In the same way, in one shot, you have both the nature. As Sahaja Yogi, you can achieve that kind of a balanced personality. It is for your good, for your evolution, for your development. So today, all of you have a great chance of evolving individually within yourself this Shiva Tattva, which ultimately permeates into the whole. Kabira has said it in a beautiful couplet. I don't know if you people have understood. It is Mana mamata ko thira kar launga. The compassion of my heart, I will vibrate. I will bring it out. The compassion of my heart, I will vibrate and bring it out of Pancho Tattva Milaunga and put it into the 5 elements. See Kabiraj, you follow him, how great he is. People talk of Kabir Das. See, he says that take it out of the heart and put it into all the 5 elements. This is what is Sahaja. If you understand that, then you don't have to understand anything. You have got it in your heart, become the capitalist in your heart and become a communist outside. If you can achieve this balance properly, you have done it. And we can do it. We all of us put together, we will do it, we can achieve. And we can show to the world that everyone can achieve. All ordinary human beings, so-called, we can become extraordinary. So today we have to decide about ourselves that we are going to do it, we are going to be educated about it in a spiritual way, in a sahaja way. And every moment, if you watch yourself, you can do it. And not to explain yourself, or to say, oh, this happens to me and that happens to me. That's not the point. Many people tell me like that. That's absurd. You challenge yourself, how can it happen to you? Why don't you do it? You should do it. Why can't you do it? Like that you take yourself to task and you can work it out, I'm sure, because you have got the power. I bless you all for your spiritual development and for your collectivity. Both things must be looked at. If you have spiritual development and no collectivity, it is useless. If you have collectivity and spiritual development, none, it is useless. Combine it properly. So we have to take Shiva and establish him into the Virat. This is what we have to do. And if you understand this point, your relationships with others also will be good, permanent, of a very substantial nature. And the quality of Sahaja Yogi's life will be something very, very great. May God bless you. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। महाशिवरात्रि के ब्रह्मणाति महाशिव सदाशिव मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाशिव साक्षात् श्री
ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाशिव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। नमस्ते। साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। वन मोर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्ति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बियरचा ग्लास वगैरे असेल तर तुम्ही चालायचं. तर आज चालेल शिवाच्या आला का साऱ्या जगातून आला. श्री गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताय नमः। ओम भगवती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। बरं आहे पाणी? गार आहे. ते गाराचं. नाही, ते वेगळं. आणखी थोडं गरम पाहिजे. ते आणून ठेवलं होतं ना बराच वेळ. चला जाऊ द्या. थोडं करून आणून त्यात होता. चला तर त्यांचं तुम्ही घ्या ते होऊन जातील तेवढं बरं. अब आप दोनों थोड़ा थोड़ा सपने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजिरे माथा सेंदूर पाझरे वरिभरे दूरवान कुरांचे तुरे माझे चित्तविरे मनोरथ पुरे देखो निचिंता हरे गोसावी सुत वासुदेव कविरे त्या मोरयाला स्मरे। गणपती अथर्व शीर्ष निश्चय करें. यहाँ रगड़ी जोर से रगड़ी लेफ्ट हैंड से रगड़ी लेफ्ट हैंड से रगड़ आता म्हणायचं नीचे का पैर. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि
सर्वं जगदिदं मुक्तो जायते सर्वं जगदिदं इनको दोनों दो। तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि पाणि यहाँ गणेश ओ नलो नीलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः. You take this out. Keep it for drying properly. सुखवाला ध्यान करेंगे, हम लोग नहीं करते हैं, डेवलपमेंट वो नहीं आता, गहनता नहीं आता. अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तरूपम् बिन्दुरुत्तरूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषि नेचुर्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमुङ्कुशधारणं रुदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं पूजितं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं दैवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः. मैं मंत्र बोलूंगा, मेरे पीछे बोलने का. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणपति साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणपति साक्षात् माताजी निर्मला देवी नमो नमः. पुढे बसा. तुम्ही वाचायचं करता का? हो. ह्याना पुढे बसतो. ह्याना वाचायला सांगा. शिवै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणताः स्मतां सर्वमङ्गलमाङ्गल्यै शिवे सर्वार्थसाधिकै शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. इसके बाद मेरे पीछे एक एक वर्ड बोलने का, जिसे संकल्प कहते हैं. मम आत्मनाः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां क्षेम धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य
ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अभिवृद्ध्यर्थम द्विपद चतुष्पद शांत्यर्थम पुष्ट्यर्थम तुष्ट्यर्थम समस्त मंगल वाप्त्यर्थम समस्त कल्याण वाप्त्यर्थम समस्त दुरितोप शांत्यर्थम समस्त अभ्युदयार्थम समस्त इष्टकाम सिद्ध्यर्थम समस्त मनोकामना पूर्ति प्रीत्यर्थम समस्त कल्पोक्त फल वाप्त्यर्थम नाखून पैर उंगली सब बारीक कुछ खोल दीजिए पहले 24 पूरा, और खास करके ये एड़ी में और उसकी विशुद्धिला समस्त कल्पोक्त फल वाप्त्यर्थम समस्त बाधा निवारण प्रीत्यर्थम यथाशक्त्या यथा ज्ञानेन यथा धनेन ध्यानावाहनादि ओम आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवींच षोडशोपचारे पूजनंच करिष्ये। अभी पंचामृत का रखो, ठीक मंत्र म्हणायचं पार्वती साक्षात, शिवानी साक्षात, भवानी शिवानी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पार्वती माता साक्षात् आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पार्वती माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भवानी माता साक्षात् आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भवानी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। पंचामृत डालिए। महालक्ष्मी नमः, श्री महासरस्वती नमः, श्री महाकाली नमः। आगे करते हैं ना उसको, जब पीछे हाथ लगाए तो भी चलता है। तुम्ही इकडे लक्ष, तुम्ही बोलत जा। श्री महालक्ष्मी नमः, श्री महासरस्वती नमः, श्री महाकाल्ये नमः, श्री ब्रह्मदेवाय नमः, श्री वेदाय नमः, श्री वेद महर्षि व्यासाय नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री स्थानदेवताय नमः, श्री वास्तुदेवताय नमः, श्री ग्रामदेवताय नमः, श्री शची पुरंदराय नमः, श्री कालपुरुषाय नमः, श्री आदिगुरु दत्तात्रेयाय नमः, श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री दुर्गा माताय नमः, श्री सीतारामाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री सिद्धमंत्राय नमः, श्री निर्मल विद्याय नमः, श्री मेरी कृष्णाय नमः, श्री मातृ पितृभ्यां नमः, श्री आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। डालिए।
श्री आदिशक्ति नमः। ओम श्री महादेव्यै नमः। ओम श्री अंबिकायै नमः। ओम श्री परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री ईश्वर्यै नमः। ओम श्री अनैश्वर्यै नमः। ओम श्री योगिन्यै नमः। ओम श्री जयन्त्यै नमः। ओम श्री शाम्भवै नमः। ओम श्री शान्त्यै नमः। ओम श्री ब्राह्म्यै नमः। ओम श्री ब्रह्माण्डधारिण्यै नमः। ओम श्री महारूपायै नमः। ओम श्री महामायायै नमः। ओम श्री माहेश्वर्यै नमः। ओम श्री लोकरक्षण्यै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री दुर्गपारायै नमः। ओम श्री भक्तचिंतामण्यै नमः। ओम श्री मूर्त्यै नमः। ओम श्री सिद्ध्यै नमः। ओम श्री मूर्त्यै नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदायै नमः। ओम श्री मंत्रमूर्त्यै नमः। ओम श्री महाकाल्यै नमः। ओम श्री सर्वमूर्ति स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री वेदमूर्त्यै नमः। ओम श्री वेदभूत्यै नमः। ओम श्री वेदांतायै नमः। ओम श्री व्यवहारिण्यै नमः। ओम श्री अनघायै नमः। ओम श्री भगवत्यै नमः। ओम श्री रौद्रायै नमः। ओम श्री रुद्रस्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री नारायण्यै नमः। ओम श्री नारसिंह्यै नमः। ओम श्री नागयज्ञोपवीत्यै नमः। ओम श्री शंखचक्रगदाधारिण्यै नमः। ओम श्री जटामुकुटशोभिन्यै नमः। ओम श्री प्रमाणाय नमः। ओम श्री प्रमाणाय नमः। ओम श्री आदि मध्यवसानै नमः। ओम श्री पुण्यदायै नमः। ओम श्री पुण्योपचारिण्यै नमः। ओम श्री अभी दही दिया तो दही नहीं अभी नहीं, ये 42 मंथ्स हो गए, 21 है। जल्दी जरा फास्ट मेक इट फास्ट। ओम श्री गंभीरायै नमः। ओम श्री रूपान्वितायै नमः। ओम श्री कालराज्यै नमः। ओम श्री अनल्पसिद्ध्यै नमः। अनल्पसिद्ध बघा कळलं ना, काही मेहनत न करताना हो गया शायद। ओम श्री अनल्पसिद्ध्यै नमः। बघा काय तर ते धर्मच आहे आमचा, करता काय हे सर्व धर्म आहेत आमचे। बिना आप कुछ किए माता सब कुछ दे देती है, ये ऐसा लिखा इसका मतलब। अनल्पसिद्ध। अनल्पसिद्धि, आप कुछ भी संकल्प न करे, कुछ भी करे या न करे, माता जी दे ही रही है और आप ले रहे हैं। ये धर्म है हमारा, ये क्या करे, ये छुट्टी तो नहीं मिलता। छोड़िए। पुष्कर ओम अनल से अल्पो नहीं देते। अनल्पसिद्ध्यै नमः। ओम श्री कमलायै नमः। ओम श्री पद्मवासिन्यै नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री मनसिद्धायै नमः। ओम श्री मनोयोगिन्यै नमः। ओम श्री मातंगिन्यै नमः। ओम श्री चंडमुंडचारिण्यै नमः। ओम श्री दैत्यदानववासिन्यै नमः। ओम श्री मेषज्योतिषायै नमः। ओम श्री परम ज्योतिषायै नमः। दानव काय दैत्य दानव वासिन्यै नमः। वासिन्य कसं ते काहीतरी चुकलेलं ब्राह्मणाने प्रकार। वासिन्य कसं असेल, वारिण्य असेल, हा वारिण्य असेल, वारिण्य असेल, नाशिन्य होएगा। नाशिन्य असेल किंवा आपले वारिण्य आहे काय प्रकार, त्याच्या आधी ते बघा नाशिन्य, त्याच्या आधी ते बघा काय त्याच्या आधी मनोयोग, ते नाशिन्य आहे. नाही, त्याच्या आधी काय चंडमुंड चारिण्य, चारिण्य कसं असेल, दारिण्य किंवा वारिण्य असेल। चारिण्य नमः. त्यांनी म्हणणं चारिण्य म्हणजे चीज करणं, मारणं. चारणे म्हणजे नाही, चार संचार चारिण्य नाही, चर 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 शब्द चांगला आहे। दोनों जगह नाशिन्य लिखने का। नाशिन्य चंडमुंड नाशिन्य, दैव दैत्य दानव नाशिन्य। नाशिन्य ते चारिण्य अर्थ चांगला अर्थ म्हणजे ह्याच्यात मिसप्रिंट करून चालत नाही, हर जगह मिसप्रिंट करते अपनी एफिशिएंसी ऑफ इंडियन प्रिंटिंग।
हाँ। नहीं, ये काफी डालिए, एक एक कटोरी डालना है सब कटोरी भर डालिए, एक कटोरी देंगे। ओम श्री चंड मुंडनाशिन्ये नमः। ओम श्री दैत्य दानवनाशिन्ये नमः। ओम श्री मेष ज्योतिषायै नमः। ओम श्री परम ज्योतिषायै नमः। ओम श्री आत्म ज्योतिषायै नमः। ओम श्री सर्व ज्योति स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री सहस्रमूर्ते नमः। ओम श्री शर्वाण्यै नमः। ओम श्री सूर्यमूर्ति स्वरूपिण्यै नमः। ओम श्री आयुर्लक्ष्म्यै नमः। ओम श्री विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी प्रदाय। केशर आणि केशर वगैरे यांनी काय काय सांगितलं? नाही हे असं सुंठे केशर बिशर मिसिंग आहे. यांनी 4-5 वस्तू सांगितल्या होत्या. हो, पण काय आहे त्याच्यातले आहेत का फुलं बिलं आहेत ते? हा ते मला वाटतं गुलाब ते हे असतं ना, गुलाब कळी हा गुलाब म्हटलं बरोबर घातलं रावबाई. थंडाई, थंडाई 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 बरोबर थंडाई. थोडी भंग घाला नको रे बाबा. ओम श्री विचक्षणाय नमः. ओम श्री क्षीरार्णवन्वते नमः. ओम श्री वागीश्वर्यै नमः. ओम श्री वाक्सिद्ध्यै नमः. ओम श्री अज्ञान ज्ञान गोचरायै नमः. ओम श्री बलायै नमः. ओम श्री परम कल्याण्यै नमः. आता बघा, ज्ञान अज्ञान गोचरई म्हणून ओनली द मदर कॅन डू इट. तिला अज्ञान आहे माहित, तिला नुसतं ज्ञानच माहित नाही, अज्ञान आहे माहित आहे. म्हणून आईशिवाय कोणीच करू शकत नाही. हे कोणत्याच देवाला येत नाही. फक्त ज्ञान माहिती आहे त्यांना, अज्ञान नाही माहिती. मला अज्ञान आहे माहिती. हा, सगळं माहिती आहे, ज्ञान अज्ञान. ओम श्री परम कल्याण्यै नमः. ओम श्री भानुमंडलवासिन्यै नमः. ओम श्री अव्यक्तायै नमः. ओम श्री व्यक्तरूपायै नमः. ओम श्री अव्यक्तरूपायै नमः. ओम श्री अनंतायै नमः. ओम श्री चंद्रायै नमः. ओम श्री चंद्रमंडलवासिन्यै नमः. ओम श्री चंद्रमंडलमंडितायै नमः. ओम श्री भैरव्यै नमः. ओम श्री परमानंदायै नमः. ओम श्री शिवायै नमः. ओम श्री अपराजितायै नमः. ओम श्री ज्ञानप्राप्त्यै नमः. ओम श्री ज्ञानवत्यै नमः. ज्ञानवती, ज्ञानवती आहे ना? ज्ञानवती सर्व ज्ञानाची अधिष्ठात्री. ओम श्री ज्ञानमूर्त्यै नमः. ओम श्री कलावत्यै नमः. ओम श्री श्मशानवासिन्यै नमः. ओम श्री मात्रे नमः. हमारे हाथ में आकर के इसका परम कल्पिन्यै नमः. ओम श्री घोषवत्यै नमः. ओम श्री दारिद्र्यहारिण्यै नमः. ओम श्री गॉड. मक्खियाँ इसमें गिर रही हैं, बी केयरफुल. जी तो नहीं. तेजो मुख्यै नमः. ओम श्री विष्णुवल्लभायै नमः. ओम श्री केशविभूषितायै नमः. ओम श्री कूर्मायै नमः. ओम श्री महिषासुरघातिन्यै नमः. ओम श्री सर्वरक्षायै नमः. ओम श्री महाकाल्यै नमः. ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः. ओम श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. हे म्हटलं की आलं सगळं त्याचेच इतके अनेक अर्थ आहेत. त्याला सगळी घाला टाकत. हो हो, सगळी घाला. तुम्ही हातमध्ये घालू नका, तशी चोटून टाका. आता पाणी घाला. पंचामृत में आता साधं पाणी घाला तांब्याने. मक्खियाँ संभालिए, कोई मक्खी तो नहीं है.
एक करिए, एक में कर लो आप पानी, उसमें कर लो पानी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। चावल हे वापर आता काय आता झालं फार मोठं काम झालं आता रावडी चालते मी थोड्याचं घातलं नव्हतं ते निघून गेलं बरोबर आता मी काढलाय का मग ठीक आहे सगळं आणलं मग तेवीचं करायला पाहिजे नंतर शिवाचं पांढरा कपडा तिला पेटून नंतर करू ठीक आहे एक एक काढू दे एकदम दोन और कुछ है इतना नहीं है। अब शाल दे दो जरा पहले शाल दे दो शॉल वापस देना वापस पहिली शाल दा चालेल पाठीला व्हायब्रेशन्स खूप थंड थंड मलाच होऊन राहिले बघा किडा काढतो खाली किडा तर ह्याला काय करायचं उघडून घ्या हे पुरुषांनी घालायचं बायकांनी नाही शिवाला इसको औरतों ने हाथ नहीं लगा रूप में पूजा की है हम लोगों ने तो लड़के बच्चे कर सकते हैं लड़के बच्चे कर सकते हैं चलो या घ्या घाला कुठून मागावून पुढे घालायचं लपेटून घेणार आहोत बरं माग त्याला खालपर्यंत घ्या पायापर्यंत पाय लपून टाका तो आसनाचा टॉवेल घाला तर आसन रखो नीचे पाव के नीचे रखो नहीं हो तो भी नहीं जरूरी चमक नमक म्हणून असतं शेवटी नामावली ना त्याला चमक नमक म्हणतात ते शेवटी मग ते रुद्रात असतं आणि काय असतं की ज्या वेळेला तुम्ही आता हे वाहाल ना त्यावेळेला नाव घ्यायचं शिवाची हवन नसतं शिवाला हवन नाही बेल व्हायचे ते बेलपत्र आणले नको हे नको बरं हा ठेवून द्या ठेवून द्या हे लावायला ठेवून द्या कीप इट डाऊन प्लीज आज पुरुषांचं काम आहे बायकांचं काय सगळं लावावं लागेल पायाला हाताला हाताला नावा लावाल पण पायाला लावलं तर चांगलं बैठ जाइए छोड़ा भाई साहब, बैठ जाएं सब बैठ जाइए। ये बैठ जाइए पीछे की बच्चों ने आहेत तर रुद्र आहेत ना रुद्र काढा तुम्ही रुद्र काढा तसे ते नमक चमक ही नावं आता नका घेऊ नावं जेव्हा तुम्ही माझ्या पायाची बेल वाढाल तेव्हा लावायची नमक चमक आहे काय तुमच्या डोळ्या का नमक चमक रुद्र बघा त्याच्या शेवटी आहे ठीक आहे नमक चमक जे असते तुम्ही ह्याच पुस्तकात पाहिलं तुम्ही मोरेश्वर का नावाडीच आहे म्हणून सगळे सुरुवात मोरेश्वर कुठे मोरेश्वर तुम्हारे पास किताब है ना एक पूजा का है क्या शिवमहिमा आहे का बघू त्याच्यातच आहे नमक चमक है नमक चमक मिल गया
आहे थंड हे करा. नमक चमक. नमक चमक आलं ना? नमक आणि चमक असे दोन भाग असून नमकाचे 11 कसं वचन. आम्हाला माहिती म्हणा म्हणा अर्थ दिलेला आहे त्यांना सांगा मग ते काय नाही एवढे म्हणून टाकायचं फक्त एवढं म्हटलं की झालं. आधी हे तुम्ही म्हणा मग मी अर्थ वाचून. अर्थ याला आहे का? अर्थ नाही आधी दिलाय तुम्ही माहिती हा? त्याची. आधी माहिती दिली त्याची. तर नुसतं म्हणून टाका काय झालं ठीक आहे. मग माहिती आहे नुसती अर्थ नाही. ये दूसरा है। हे इथून पार इथपर्यंत. ये इसको चढ़ाते जाना मेरे पैर पे. ये जो रखा है त्याच्यातच भस्म घाला. ऐसा लगाना. त्याच्यातच भस्म घालून टाका. ते जमिनीवरच घाला. त्याच्यात घाला भस्म. नंतर थोडंसं वर ठेवा कपाळाला लावायला. थोडंसं ठेवा भस्म. सारी को संभालो. हा, बस झालं बस झालं बस झालं. आता भस्म द्या इकडे ठेवून द्या थोडं. हा चढवा तू चढवा थोडंसं द्या मला. हरि ओम इडा देवहुर्मनुर्यज्ञनिर्बृहस्पतिरुक्थामदानि लगावायचं. शम शिषद विषद विश्वेश पानी से पैसे जैसे पवाव धुए वैसा धुए. पृथ्वी मातर्मा माहीन सीर मधु मनुष्य हार वर लावू नका. त्यामध्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि मधुर्मतिं देवेभ्यो वाचमुद्यासं शुश्रूषेण्यं मनुष्येभ्यस्तं मा देवा अवन्तु शोभायै पितरोऽनुवदन्तु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च वरुण अरुणाय च नमः शृंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमो हंत्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शंभवे च मयोभवे च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थाय च कल्गुल्याय च नमः पार्याय चार्वाय च नमः अतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय जरा आहिस्ता आहिस्ता नमः शस्ताय च Do it slowly. विकत्याय च प्रवायाय च. ओम शम च ये शौम शम च मे मयश्च मे प्रियं च मे नु कामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वश्च मे महश्च मे संविश्च मे ज्ञात्रं च मे श्रुच्छश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे ऋतं च मे अमृतं च मे यक्ष्मं च मे मेनायश्च मे जीवान्तुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मेनमित्रं च मे अभयं च मे तुङ्गं च मे शयनं च मे कुशा च मे सुदिनं च मे. स्वल्प चरित्र बघा. तुम्ही शिवमानस म्हणताय ना देशपांडे म्हणा म्हणा. फॉलो करू. रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरं थोडं पाणी नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यतां. सुवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुधं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभु स्वीकुरु. छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो. आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना
निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणमयजं वा मानसं वा परायणं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाधे श्री महादेव शंभो कैलासराणा शिवचंद्रमौळी फणींद्र माथा मुकुटी झळाळी कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी तुझवीण शंभो मज कोण तारी ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्राव्रतं सं रत्नाङ्कल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं सुरेशं पद्मासीनं समन्तातस्तुतमम गणैर्व्याघ्रकृति वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्ति साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकार अमलेश्वरम् परल्या वैजनाथञ्च डाकिन्या भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं वृषणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः 14 आहेत ना? सप्तजन्म तसं म्हणजे 12 आहेत पण 14 नाव आहेत. मरणेन विनश्यति आतापर्यंत 12 पण आहेत. आम्हाला 2 सांगितले म्हणजे लिहून घे. नाही आहेत तर 12 नावं 12 आहेत. तर काय आहे की केदारनाथ नुसतं ह्याला अमरनाथला नुसतं लिंग आहे आणि केदारनाथला नुसतं लिंग नुसतं ह्याला आहे नेपाळला आणि तिथे फक्त योगी असे 2 ठिकाण आहेत. त्याच्यामुळे काय होतं एकंदर 14 प्रकार पण आहेत 12 कळलं का? अर्धा भाग त्याचा इकडे तर 12 नावं आहेत का? 12 आहेत. करू ते आता 12 ज्योतिर्लिंग. शिवमहिम्न आहे ना शिव सबन म्हणायला सगळे सबन सगळं म्हणायचं नाही ती 1000 नाव आता केदार आहे ना केदारनाथचं नुसतं तिथे हे आहे काय म्हणतात त्याला नुसतं आदिशक्तीचं स्थान आहे तिथे केदारनाथ म्हणून त्याला सध्या ह्याला आपलं ते नुसतं लिंग आहे एक पान आहे ते वेगळं छोटे श्रीशैले मल्लिकार्जुन श्रीशैल्य दक्षिणेला दक्षिणेला ते गुरुचरित्रात पण दाखवतात ना. हैदराबाद पासून जवळ आहे. गुरुचरित्रामध्ये दाखवतात. नाही हैदराबाद पासून जवळ आहे 150 मैलावर आहे. हा जवळ आहे. आपण ते नाव म्हणतो दारुकावने कुठे नागेशम रामेश्वरम नागेशम दारुकावने म्हणजे हे बरोबर रामेश्वर 2 हे आहेत लिंग त्यांचे हे नाही आहेत म्हणून एकंदर 10 आहेत. त्यांना विचारा ते सांगतील तुम्हाला कोणत्याही शिव भक्ताला विचारलं तू सांगतील की 2 ह्याचे नाही आहेत. केदारनाथला देवीचं स्थान आहे आणि
मला नेपाळला जे स्थान आहे पशुपतीनाथ पशुपतीनाथ त्याचा अर्धा भाग आहे त्यांचा अर्धा भाग आहे. सदाशिवचा मंत्र सदाशिव सांगा जरा. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. For 2 times more. ओम तमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम तमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. आता हे करू त्याचं कापड घालून वरती राहा. आता हे तुम्ही जर कोणालाही जर सर्दी वगैरे असतील थोडस जर मधात घालून घेतलं तर सर्दी बरी होणार. त्याच्यासाठी तुम्ही मग इंग्रजी सांगा. ये तो बाद में सब पुरुष लोग लगा सकते हैं. आमतौर पर माता जी ने बताया है ये ऐसी दवा है कि जो मध में घुलकर आप खाएंगे तो आपको सर्दी नहीं होगी, आपकी सर्दी जाएगी. जुकाम तो ये सबको हिंदी में जुकाम हिंदी में भाषा वेगळी कोल्ड कफ यू में से ॲलर्जीला फार चांगला एलर्जी of cold allergy you may say एनी कोल्ड ॲलर्जी any cold allergy एनी ॲलर्जी हो any allergy also if you ये मध में घोल कर खाने का मधु में for those who have got cold liver for cold liver any allergy cold any allergy cold even cold even liver this is better for liver no not right side left side for left side म्हणजे cold liver म्हणायचं. cold liver पीछे वालों का ध्यान रखिए आप सीधे जमीन पे जाइए. yes correct all left side problems are cold cough cold left side problem. This will be distributed to you in piece of paper. Everybody will get this after puja. Everybody will get this in piece of paper. अहो कशाला give it to every center. We will give it to every center, and then it will. ओम तमेव Om साक्षात् Shri Varadaya Namaha. ओम तमेव साक्षात ओम तमेव साक्षात. ओम त्वमेव ट्रान्सलेशन येईल का साक्षात. ट्रान्सलेशन येईल जुलै मध्ये चला एक ट्रान्सलेशन बेटर 108 ला काय वेळ नाही लागला. 1000 तुम्ही 1000 नावं घे ना. आपण 108 घेतो. 108 ट्रान्सलेशन 1000 विचार आहे तुमचा 108 108. ओम त्वमेव साक्षात श्री स्थिरदाय नमः. स्थिर म्हणजे जो स्थिर आहे तो. Who is firm? Shiva is firm. ओम श्री स्थाणुयाय नमः. साखर जाऊ दे.
घशाला त्रास होतो. घशाला ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्थिराय नमः. शिव इज फर्म. ओम श्री त्वमेव साक्षात् श्री स्थाणुयाय नमः. शिव इज पिलर. ओम श्री त्वमेव साक्षात् श्री प्रभुयाय नमः. शिव इज ओवरलॉर्ड. ओम त्वमेव साक्षात् श्री भीमाय नमः. शिव इज टेरिफिक. ओम श्रीमेव साक्षात् श्री प्रवराय नमः. शिव इज फार एक्सलेंट. ओम श्री साक्षात् श्री वरदाय नमः. शिव इज बेस्ट ओवर ऑफ boons. Bestower of boons. ओम त्वमेव साक्षात् श्री वराय नमः. शिव इज foremost. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वात्माय नमः. शिव इज द सेल्फ ऑफ ऑल beings. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वविख्याताय नमः. शिव इज renowned as the core of all beings. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वाय नमः. शिव इज द all. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वकराय नमः. शिव इज the doer of all. D-O-E-R. Doer of all. ओम त्वमेव साक्षात् श्री भवाय नमः. शिव इज existence. ओम त्वमेव साक्षात् श्री जटियाय नमः. शिव इज the one with matted hair. ओम त्वमेव साक्षात् श्री चर्मियाय नमः. शिव इज clothed in the tiger or elephant skin. ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिखंडियाय नमः. शिव इज with like the crest of a peacock. त्वमेव साक्षात् श्री सर्वांगाय नमः. शिव इज ओम सर्वांगाय नमः. That is salutation to him who has the entire universe as his limb. ओम श्री साक्षात् श्री सर्वभावनाय नमः. शिव इज adoration to him who manifests and maintains all. ओम त्वमेव साक्षात् श्री हराय नमः. शिव इज withholder. ओम त्वमेव साक्षात् श्री हरिणाक्षाय नमः. शिव इज deer-eyed. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वभूतहराय नमः. शिव इज the destroyer of the created beings. ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रभुयाय नमः. शिव इज the enjoyer. ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रवृत्तियाय नमः. शिव इज manifestation. ओम त्वमेव साक्षात् श्री निवृत्तियाय नमः. शिव इज traced back to the original state. ओम त्वमेव साक्षात् श्री नियताय नमः. शिव इज the self-controlled. ओम त्वमेव साक्षात् श्री शाश्वताय नमः. शिव इज the eternal. ओम त्वमेव साक्षात् श्री ध्रुवाय नमः. शिव इज the immovable. ओम त्वमेव साक्षात् श्री श्मशानवासियाय नमः. शिव इज the inhabitant
of the cremation ground. Om Tvameva Sakshat Sri Bhagavanaya Namaha. Shiva is the owner of 6 graces. Om Tvameva Sakshat Sri Gacharaya Namaha. Shiva is the space dweller. Om Tvameva Sakshat Sri Gocharaya Namaha. Shiva is the perceiver through the senses. Om Tvameva Sakshat Sri Ardhanaya Namaha. Shiva is the punisher. Om Tvameva Sakshat Sri Abhivadyaya Namaha. Shiva is the ultra worshipped. Om Tvameva Sakshat Sri Mahakarmaya Namaha. Shiva is the great act. Om Tvameva Sakshat Sri Tapasviyaya Namaha. Shiva is the ascetic. Ascetic. A-S-C-E-T-I-C. Om Tvameva Sakshat Sri Bhuta Bhavanaya Namaha. Shiva is the creator of the 5 elements. Om Tvameva Sakshat Sri Unmatta Vesha Prachannaya Namaha. Shiva is the one concealed in the guise of madness. Om Tvameva Sakshat Sri Sarvaloka Prajapatiyaya Namaha. Shiva is the Lord of all existences. Om Tvameva Sakshat Sri Maharupaya Namaha. Shiva is the all-round form. Om Tvameva Sakshat Sri Mahakaya Namaha. Shiva is the cosmic body. Om Tvameva Sakshat Sri Vriksharupaya Namaha. Shiva is the form of the bull. Shiva is in the form of the bull. Vrisharupaya. Om Tvameva Sakshat Sri Mahayashaya Namaha. Shiva is the famous. Om Tvameva Sakshat Sri Mahatmaya Namaha. Shiva is the great-minded. Om Tvameva Sakshat Sri Sarvabhutatmaya Namaha. Shiva is the self of all beings. Om Tvameva Sakshat Sri Vishwarupaya Namaha. Shiva is the universe is his form. Om Tvameva Sakshat Sri Mahahanumaya Namaha. Shiva is the great jaws. Om Tvameva Sakshat Sri Lokapalaya Namaha. Shiva is the ruler of the world. Om Tvameva Sakshat Sri Antarhitatmaya Namaha. Shiva is the concealed self. Om Tvameva Sakshat Sri Prasadaya Namaha. Shiva is the clearness. Om Tvameva Sakshat Sri Hayagardhavya Namaha. Shiva is the rides on a chariot drawn by the mules. Om Tvameva Sakshat Sri Pavitram Namaha. Shiva is purifier, who purifies everything. Om Tvameva Sakshat Sri Mahanaya Namaha. Shiva is the worshipful. 50 झाले. आता फुलं घ्या. Flowers. Take flowers now. ही ती दोन्ही घ्या. ही पुन्हा जोडी तुझ्या पांढरी व्हाईट फ्लॉवर. Now you have to put. घ्या. आता फुलं व्हा. तोडून वाले नाही आता एक एक फुल व्हा. तोडाय बिडायचं नाही, तोडलेलीच आहे. हे घ्या. वन फ्लॉवर बेटा. One at a time. एक फूल रखने का. एक मिनट बेल पर Om Tvameva Sakshat Mahanaaya Namaha.
Shiva is the worshipful. Om Tvameva Sakshat Sri Niyamaya Namaha. Shiva is the ordinance. Om Tvameva Sakshat Sri Niyamasritaya Namaha. Shiva is attained through Niyama. Om Tvameva Sakshat Sri Sarvakarmaya Namaha. Shiva is all activities. All activities are his. Om Tvameva Sakshat Sri Swayambhutaya Namaha. Shiva is self-manifestation. Om Tvameva Sakshat Sri Adivyaya Namaha. Shiva is the very first. Om Tvameva Sakshat Sri Adikaraya Namaha. Brahma, the creator, was created by him. Om Tvameva Sakshat Sri Nidhaya Namaha. Shiva is the treasurer. Om Tvameva Sakshat Sri Saharakshaya Namaha. Shiva is the omni-eyed. Om Tvameva Sakshat Sri Vishalakshaya Namaha. Shiva is the universal seer. Om Tvameva Sakshat Sri Somaya Namaha. Shiva is the partner of Uma. Om Tvameva Sakshat Sri Nakshatra Sadhakaya Namaha. Shiva is the benefactor of the stars. Om Tvameva Sakshat Sri Chandraya Namaha. Shiva is the moon. Om Tvameva Sakshat Sri Suryaya Namaha. Shiva is the sun. Om Tvameva Sakshat Sri Shaniyaya Namaha. Shiva is the Saturn. Om Tvameva Sakshat Sri Ketuyaya Namaha. Shiva is the node. Om Tvameva Sakshat Sri Grahaya Namaha. Shiva is the Rahu. Om Tvameva Sakshat Sri Grahapatiya Namaha. Shiva is the Mars. Om Tvameva Sakshat Sri Varaya Namaha. Shiva is the worshipful. Om Tvameva Sakshat Sri Atriyaya Namaha. Shiva is the Mercury Buddha. Om Tvameva Sakshat Sri Atriya Namaskartaya Namaha. Shiva is adoration to him who paid homage to Anasuya, the wife of Atri, for beginning two illustration sons, Dattatreya and Durvasa. Om Tvameva Sakshat Sri Mrugavanarpanaya Namaha. He who aimed arrow at a stag. Om Tvameva Sakshat Sri Anaghaya Namaha. Shiva is sinless. Om Tvameva Sakshat Sri Mahatapaya Namaha. Shiva is the super austerity. Om Tvameva Sakshat Sri Ghortapaya Namaha. Shiva is the terrible austerity. Om Tvameva Sakshat Sri Adinaya Namaha. Shiva is the high while seeming humble. Om Tvameva Sakshat Sri Dinasadhakaya Namaha. Shiva is the uplifter of the poor. Om Tvameva Sakshat Sri Samvatsarakara Namaha. Shiva is the maker of time. Om Tvameva Sakshat Sri Mantraya Namaha. Shiva is the mystic of sound. Om Tvameva Sakshat Sri Pramanamaya Namaha. Shiva is the evidence. Om Tvameva Sakshat Sri Paramaya Tapaya Namaha. Shiva is the ultra austerity. Om Tvameva Sakshat Sri Yoginaya Namaha. Shiva one given to yoga. Om Tvameva Sakshat Sri Yojaya Namaha. Shiva is the worthy of union. Om Tvameva Sakshat Sri Mahabijaya Namaha. Shiva is the great seed. Om Tvameva Sakshat Sri Maharetaya Namaha. Shiva is the great reflection.
ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाबलाय नमः. शिव इज द ग्रेट स्ट्रेंथ. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुवर्णरेताय नमः. शिव इज द गोल्डन सीमेन. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वज्ञाय नमः. शिव इज द omniscient. शिव इज द omniscient. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुबीजाय नमः. शिव इज द बेस्ट सीड. ओम त्वमेव साक्षात् श्री बीजवाहनाय नमः. शिव इज द सीड बेरर. ओम त्वमेव साक्षात् श्री दशबाहुय नमः. शिव इज द 10 armed. ओम त्वमेव साक्षात् श्री अनिमिषाय नमः. शिव इज द wingless. ओम त्वमेव साक्षात् श्री नीलकंठाय नमः. शिव इज द ब्लू throated. ओम त्वमेव साक्षात् श्री उमापति नमः. शिव इज द spouse of Uma. ओम त्वमेव साक्षात् श्री विश्वरूपाय नमः. शिव इज द cosmic form. ओम त्वमेव साक्षात् श्री स्वयं श्रेष्ठाय नमः. शिव इज innately excellent. ओम त्वमेव साक्षात् श्री बलवीराय नमः. शिव इज द mighty. ओम त्वमेव साक्षात् श्री अवलोकनाय नमः. शिव इज द inert group. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणकर्ताय नमः. शिव इज द creator of the categories. ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणपतियाय नमः. शिव इज द लॉर्ड ऑफ द categories. ओम त्वमेव साक्षात् श्री दिग्वासाय नमः. शिव इज द clothed in space. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कामाय नमः. शिव इज द lust. ओम त्वमेव साक्षात् श्री मंत्रविदाय नमः. शिव इज द knower of मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री परमो मंत्राय नमः. शिव इज द सुप्रीम मंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सर्वभावकराय नमः. शिव इज द प्रोड्यूसर ऑफ एक्झिस्टन्स. ओम त्वमेव साक्षात् श्री हराय नमः. शिव इज द अट्रॅक्टर. ओम त्वमेव साक्षात् श्री कमंडलुधराय नमः. शिव इज द होल्डर ऑफ ए ग्राउंड शेल. ओम त्वमेव साक्षात् श्री धन्वियाय नमः. Shiva is the bowman. So you see, Shiva is in all forms. And now Mataji is Shiva and she is in all forms. Now please be in meditation for 2 minutes. Till Mataji says anything, be in meditation. Sit in meditation. ओम त्वमेव साक्षात् श्री सदाशिव साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. ओम त्वमेव साक्षात् श्री
ठीक है। फोटो ले लिए क्या? ले हाँ? फोटो ले लिए ना, क्या और लेने के? इसको पहन के लिए ध्यान में लिए, बस ले लिए ध्यान में लिए और ले लो। देरी से ले लगता है ना कुछ लगता है। जैसा हो गया तो एकदम ही आया कपल के कल 12 शादियां हुई यहाँ उनको बुलाते ना जितनी भी शादी हुई किसी ने कहा ही नहीं फोटोग्राफर के लिए। कहना चाहिए आपको ऐसा हो जैसे प्राइम मिनिस्टर कहती है कोई काम नहीं करते आप ही तो सब करने वाले। पहले मेरा रिकॉर्ड 6 शादियों का रहा है। अभी तो 12 का 12 शादी का रिकॉर्ड इन्होंने करवा दिया। उनको टाइम नहीं मिला आने का आपके पास। सगळ्या सेंटरनी हार आणलेले हार आणले सगळ्या सेंटर गाडी चेंज केल्यावर गाडी चेंज करून येणार आहे त्यावेळेला अंगावर गाडी अभी नहीं बेटा बाद में बता photography session just no yellow there were no lights at all अभी लिया है there is no light there what to see the light there was no light at all 5 मिनट भी नहीं हुए वो आगे पासन कर डोंट टच ढीला है ढीला 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 है ढीला है दूर से पैर में से लाइट आया प्रकाश एवरीबडी इज लेफ्ट विशुद्धि एंड राइट नाउ समय clearing by giving vibration क्लियर I don't know if you are clear or not. Difficult people. he is clearing everybody's left विशुद्धि and right now I have cleared, but I don't know. Just see, it's all right. You're just just see
आदमी तो मेहनत करते हैं, सारा लेफ्ट से आ रहा है। तो सवाल ही निघणार नाही, चांगलं आहे. पोलराइड करते तो बन जाता बढ़िया। बिल्कुल हल्दी के रंग के है, जैसे कोई दीप जल गया हो है। बड़ी जिला खराब सभी फोटो में आया होगा आई थिंक, पर नॉट नेसेसरीली। अब ये फोटो सबने लिया था वहाँ बैठे थे, सिर्फ एक किसी के ही फोटो में आया, शेरेली के। अभी वो अल्था सब लगाएंगे। बंद करो, बंद करो। अब छत्र कब से ये गया है? बंद कर दो। सूरज कब से गया है? ये छत्र लगे वो गया बराबर लाइट वो छाता लेके ही खड़ा है। ये हमारा थोड़ा एकदम पैर सूख गए। अच्छा हुआ अभी अल्था सिखा दिया आप लोगों ने मेहनत कर। तो उठा चंदन मिक्स करायचा का भूमी माते म्हणजे पूजा पृथ्वी मंत्र आम्ही या बाकीच्या पूजा म्हणतो आता, तोपर्यंत आपलं होईल सगळं. भूमी पूजा, कुंडलिनी पूजा ह्या म्हणतो आम्ही. अरे आता एवढं सरलं आज शिवरात्रीला कशाला एवढं सरलं? नको काय नुसतं देवीचं आता जरा देवीचं हे करा, शृंगार झालं काय देवीचं म्हणा. काय आहे की साडी साडी पण आहे का? हो आहे ना. वर्मा जी वो सारी दीदी लाए. नहीं माँ वो चले गए सर. दीपा जी and योगी महाजन they have gone. They'll come in the program. कशी बघा कसा रंग बरोबर सुरे हे आम्ही सिलेक्शन केली. आपका माता जी बताया पण नेसली तर बरोबर असणारच परत नाही. फोटो खींचेंगे ये लगा के सारी बायकांना सांगा स्वेटरच काढतो. स्वेटर स्वेटर हो दिला जरा ठीक बारीक वाला आज शिवरात्रि के दिन हमेशा ठंड होनी पड़ती है. शिव जी का वो है. दादी शुदा पाच आवड जरा से बरं दिसतं कल की बात नहीं. इथे 8 सुहागिन सब बुलाओ ना. 12 सुहागिन. Jains have come again in this. दो Jains have come again. वो Jains जो थे ना जो कल ठीक कराने लिए आए थे. कहना अभी नहीं, अभी पूजा है वहीं जाइए. आप यहाँ क्यों आए? वहीं जाइए, यहाँ नहीं आने. ये पूजा का स्थान है, यहाँ नहीं आने का. आप वहीं जाइए, वहाँ ये लोग आने वाले. ये माता जी इनको बाहर कर नहीं, इनसे कहिए बाहर, इस जगह नहीं कहना. आप वहीं आइए, वहीं है कह वहीं आना है. यहाँ तो सिर्फ सहयोगियों के लिए. नियर माता समझाया. You have to put साड़ी. यहाँ किसने उनको जगह बताई आने की? यहाँ बताना ही नहीं था. उस जगह जाना. वहाँ भी जा रहे हैं क्या ना? वही This woman will tell you. You sit here. त्याने खुलवा काय केलं नाहीये. अहो झालं हे उघडायचं साड्या. सततम नमः
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणताः स्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः जोगायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सततं नमः अति सौम्यातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः You have to repeat this word. नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अच्छा लाइन पहले या पहले लाइन पहले मर्यादा बनी भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै बस मेक द लाइन या देवी सर्वभूतेषु इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेवे नमो नमः चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतव्याप्तिर्वा जगत्
नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुदासुरैर्वृष्टयन्तां दिनेषु सेविता करोतु साना शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि चापदा या साम्प्रतं चौद्दमुदैत्यतदातितै रश्माभिरीशा च सुरे नमस्तस्यै या च स्मृता लक्ष्मीर् हन्ति सर्वोदो भक्तिविनो विनम्रमूर्तिभिः नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बीच में लगाना होगा थोड़ा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गौरी माता साक्षात् आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शक्ति रूपेण अब मेरे पीछे सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। Now you put it on. थांबा जरा शुक्रिया आहे. प्लीज म्हणायला पाहिजे. तर इंग्लिश भाषेत प्लीज ना म्हटलं की गेले तुम्ही कामात. लागलं तर मर्डर करून प्लीज म्हटलं तरी चालेल. प्लीज का थँक्यू. किती टाइम आहे इथे भजन सांगू मग इकडे लावलं नाही अजून. अजून अवकाश आहे ना तर भजन सांगू एक आणखी. झालं अवकाश नाही झालं. एक मिनिट बस आता हे गजरे हे म्हणू शकता. तुम्हाला काय म्हणायचं तुम्ही आपले म्हणत राहा तोपर्यंत संपतंय. तुम्ही इकडे लक्ष देऊ नका. कुणी आणले? Now please be seated. Up to that time we will sing a bhajan. Jaya Jagadambe Jaya Ambe. एवढ्यात काय येणार आहे? जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय अम्बे जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे जय महाकुंडलिनी तू अम्बे जय महाकुंडलिनी तू अम्बे जय महाकुंडलिनी तू अम्बे जय महाकुंडलिनी तू अम्बे जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे जय विष्णु की लक्ष्मी तू 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 अम्बे जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे जय
ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय ब्रह्मा की सरस्वती तू अम्बे, जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे, जय शिव जी की पार्वती तू 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 अम्बे, जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे, जय राम की सीता तू 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 अम्बे, जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे, जय कृष्ण की राधा तू 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 अम्बे, जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे, जय येशु की मेरी तू 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 अम्बे, जय गणेश जी की माँ 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 अम्बे, जय सहस्रार स्वामिनी तू अम्बे, जय सहस्रार स्वामिनी तू अम्बे, जय मोक्ष प्रदायिनी तू अम्बे, जय मोक्ष प्रदायिनी तू अम्बे, जय निर्मल माते जगदम्बे, जय निर्मल माते जगदम्बे, जय आदिशक्ति तू जगदम्बे, जय आदिशक्ति तू जगदम्बे, जय आदि माया तू जगदम्बे, जय आदि माया तू जगदम्बे, जय महामाया तू जगदम्बे, जय महामाया तू जगदम्बे, जय सर्वस्वरूपिणी तू अम्बे, जय सर्वस्वरूपिणी तू अम्बे, जय विश्वव्यापिनी तू अम्बे, जय विश्वव्यापिनी तू अम्बे, जय त्रिभुवन स्वामिनी तू अम्बे, जय त्रिभुवन स्वामिनी तू अम्बे, जय निर्मल माते जगदम्बे, 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 जय गणेश जी की माँ अम्बे, 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 जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय, जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय, जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय, जय माता जी, 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 जय माता जी। आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय।
शिवशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। शिवशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। शिवशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की जय। Not yet married. त्यांना कशी उठी भरायची ती सांगा. एक और आ जाइए। कुठतरी आला पाहिजे. वन मोर। त्याच्यातला मी घालायला थोडंसं तिच्या हातात तांदूळ. जस्ट मिनिट जेवण इथेच आहे का? जरा इथं मला येथे येथे सेंटर जगन माता श्री निर्मला देवी की फ्रॉम दिल्ली सेंटर श्री वर्मा जी। जगन माता श्री निर्मला देवी की फ्रॉम पुणे सेंटर जगन माता श्री निर्मला देवी की। सबसे पहले पैर का माना करे क्या उद्या सर्वांना पा भेट करताना सगळ्यांना डॉक्टर वारन आराम ऑल द फॉरेन सेंटर्स आरामात For announcement, ठीक आहे. you just आता tell कसं खाणार नंतर name काय of their place. आता गावाला थोडंसं द्या. You may say loudly. From the United Kingdom, Yes. from the United States of America, जगन माता श्री निर्मला देवी की जय। शिवशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की शिवशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की शिवशक्ती माताजी श्री निर्मला देवी की। म्हणून म्हटलं आरामात होऊ द्या. आरामात Like Shiva Pindi. Shiva Pindi, you have seen the. absolutely, just like the loops. Yes, Shiling. म्हणजे सिद्ध शक्ती. Misra from Delhi. Sahyogi. Yes. From Delhi. Just take your hand. Shiva Swarupa. Deshpande from Pune Center. Kesi Sur from Delhi.
हुए हैं आप सब लोग बैठ जाइएगा प्लीज बी सीटेड नाउ देन एवरीबडी विल लुक प्लीज बी सीटेड गार्लनिंग प्लीज सिट डाउन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज बी सीटेड फोटोग्राफरला घेऊ द्या. जरा बाजूला सरका थोडं जरा बाजूला सरका मागे कोणी मागे थांबू नका जल्दी करो आता आम्हाला श्वास घेऊ देणार. अच्छा देखो फोटो माने से ठीक आहे सर अभी ले लो आता काय हात नको कोणाचे काय नको सगळे बाजूला सरा नाव टेक प्रकाश पोलोराइड का एक और ले लो. पोलोराइड का एक और. फोकस ठीक है ना इसमें. जरा माणसे बाजूला जरा आप जरा थोड़ा आरतीला सुरुवात काढून घ्या. एक सेकंड माँ एक सेकंड एक पोलोराइड का फोटो ले. पोलोराइड का ले लीजिए फोटो. ये ऐसा है. तो देखो ना कितना सुंदर है. ये निकाला है. प्रकाश जस्ट एक वन फोटोग्राफ एक से एक फोटो लेना. हाँ जरा आपको दिए. वाइट है अच्छे शंभो हर हर महादेव. तुम नीचे से ही डिसाइड हो गया Want it एक मिनिट थांबा. ते लोक काढतात. पांढरे ठेवतो थांबा थांबा एक मिनिट. देखो वाइब्रेशन कैसा हो रहा है. You can hold it against your body. If you make hold it near the warmth of your body. You hold it near the warmth of your body. Some that line is going in front of your camera. this one So the line of your See, ऊपर से ऐसा डायमेंशन आता है. Come out. तेरा पैकिंग का
Going back. I don't know. What's wrong with this camera? This will come. This will come. This will come. Yes, bro. Put it तो कापूर तोडला पाहिजे See, let's come out well. कापूर नाही राहिले तेच मला वाटतं I think what has happened is fluid of one of them. कापूरच्या गंधामध्ये घालून कापूर केशर सगळं गंधामध्ये घालून उघडला होता ना. जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको। निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। जो भी चरण में आया सुख ही मिला उसको, मान में ओमा बैठ के दिल में ओमा लौट के ना जाना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ। उजियारा माँ कर दिया उजियारा, कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता, माँ है भारत माता। इस धरती पर आके, इस धरती पर आके दुख से दूर करना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन लो। हो सके जो सेवा, हो सके जो सेवा हमसे करा लेना माँ सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ देना। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणपति साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी
जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय। जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय। जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय। जय माता जी, 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 जय माता जी। प्लीज बी सीटेड। टेक बंधना, बंधन लीजिए और बैठिए।